everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now look at this question. And here we are given one situation. We have fish and we have human eye indicated by letter S and T respectively. And then fish, obviously it is inside water whose refractive index is given as mu. Okay. Location of fish की अगर आप बात करो, then this is at a distance of h by 2 from this interface, and this height of this beaker containing water is h. Okay, and this I is also at a distance h from this interface above. What we have to calculate in A, at what distance from itself will the fish see the image of the eye? So where will fish see the image of eye? And again, there is this S thing attached. Maybe more than one image is getting formed. That we will explore as we will move ahead with the solution. So let us first start. ऐसे क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. ठीक है? तो देखो ऑब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्जेक्ट इज दैट थिंग जिसको देखा जा रहा है, एंड ऑब्जर्वर इज द थिंग हु इज सीइंग इट बेसिकली. सो यहाँ पे देखो देखा किसको जा रहा है? I mean, at what distance from itself will the fish see the images of the eye? So eye is getting seen, right? So eye is the object. Who is seeing it? Observe. Who is seeing it? Fish, right? So fish is the observer. So light will travel from where to where? किसी भी चीज को आप देख कब पाते हो? When from the object light is falling onto your eye. So light should travel from object to the observer. कुछ ऐसा. So यहाँ पे light तुम्हारा कहाँ से कहाँ travel करेगा? Air to water. डन है. लेट अस टेक फर्स्ट रे. सो यहाँ से सबसे पहला रे मैं नॉर्मल ले रही हूँ. सॉरी, लेट अस ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. सो सबसे पहला रे, लेट से आई एम टेकिंग दिस. This is normally incident. Okay, see, so it won't deviate. Now let us take second ray, which is incident at certain angle with the normal, and that angle will be very very small, because if we don't take a small angle, we won't be able to use the formulas that we have learned for calculation of apparent depth and real depth relation. Okay, so वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, और यूज करने के लिए we should take paraxial rays. So, यहाँ पे आप normal बना लो. It will deviate towards the normal, right? So it will deviate like this. Now, there are two refracted rays, this black one, this red one. Are they meeting in real somewhere? No. So, extend this red one. अगर आप इसको extend करोगे, you will extend it like this. Extend this black one. You will extend it like this, and it is somewhere here. So, इस fish को ऐसा लगेगा कि I यहाँ पर है, इतने distance पर है. Done है? Now, how to calculate it? So, देखो तुम्हारा refraction कहाँ हो रहा है? यहाँ पे. So this is the boundary, right? Let us call it x. So all that object distance calculation, image distance thing, everything you will be taking from x-axis line. So for this refraction, I mean, what is the object distance? So यहाँ से आप measure करोगे. Object कौन है? I. So ये है object distance. This is h. What is the image distance? Image distance somewhere यहाँ था. Let's say we don't know this. Let's say this is v. So if you put it in the formula क्या है? mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. This is formula for refraction through curved surface. इसको आप plane surface के लिए भी use कर सकते हो with r tending to infinity, right? So r का value infinite है, इसलिए ये 0 हो जाएगा. So mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0. अब देखो यहाँ पे mu2 क्या होता है? mu2 is basically the refractive index of media in which refracted light is. So यहाँ से light ऐसे आया and it got refracted towards the normal into the water, right? So refracted light is in water. mu2 क्या होगा? Mu होगा. I mean incident light is where? It is in air. So this is your 1. ठीक है? So this is mu by v minus 1 by u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देखो कैसे मेजर कर रहे हो? मेजर ऑब्वियसली एक्स से करोगे, एक्स एक्सिस से करोगे, राइट? इंटरफेस से करोगे, और कौन से डायरेक्शन में कर रहे हो? इधर, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. सो नेगेटिव. दिस इज इक्वल टू 0. सो v इक्वल टू हाउ मच? माइनस ऑफ म्यू h. दिस इज योर v. सो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है? v इज इक्वल टू म्यू h. सो फिश को ये कहाँ दिखेगा? फिश को ये इतने डिस्टेंस पे दिखेगा, या सॉरी यहां से लेकर इतने डिस्टेंस पे नजर आएगा. सो दिस डिस्टेंस विल बिकम हाउ मच? म्यू h प्लस h by 2.
because this is h by 2, right? So this is the position of image for the fish, image of eye. और ये image कब दिखेगा fish को? When fish is looking up. डन है? अगर वो अप की तरफ देखे तो उसे ये आई का इमेज कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है, एंड दिस इज एट दिस डिस्टेंस. सो लेट्स कॉल इट I1 पोजीशन फ्रॉम द फिश. ओके, अब देखो सेकंड इमेज दिख सकता है क्या? सेकंड इमेज को आप एक्सप्लोर करो. इज इट विजिबल? समझ पा रहे हो? कहीं से दिख रहा है? अगर दिख रहा है, दिखना चाहिए. जैसे देखो यहाँ पे, दिस वॉज द इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड लाइट. दिस रिफ्रैक्टेड लाइट मे फॉल ऑन टू द मिरर. और अगर ये मिरर पे फॉल करता है, देन दिस विल ऑल्सो फॉल ऑन टू द मिरर. एंड इफ इट इज फॉलिंग ऑन टू द मिरर, इट विल रिफ्लेक्ट बैक. नॉर्मल वाला तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा. एंड दिस इज विच इज स्ट्राइकिंग एट सर्टेन एंगल विल ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट बैक. डन है? सो लेट्स से ये कुछ ऐसे गया. If you will extend these two reflected lights, you will get image of this I1 over here. मैं क्यों कह रही हूँ I1 का इमेज बन रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, दिस रिफ्रैक्टेड लाइट इज कमिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम I1, राइट? इस लाइट को फोकस करो. दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर? This seems like it is coming from I1. So basically for mirror, incident light is the refracted light. Done है? And this refracted light is basically coming from I1. I1 will act as an object for the mirror. Done है? And object distance will be how much? This is your mu h from the boundary. This is h. So this is mu h plus h. Object distance is how much? This is mu uh, plus 1 into h. What will be the image distance from mirror? So from mirror it will be at the same distance, right? So I2 अगर आप mirror से check करो तो यही होगा. And what will be its distance from the fish? So fish से, क्योंकि observer fish है, fish से कितना होगा ये? h by 2 add करोगे आप further. So mu h plus h by 2. So you will be writing here 3h by 2, right? So mu plus 3 by 2 h. डन है? सो अगर तुम्हारा फिश ऊपर की तरफ देखता है ना, अगर वो ऊपर की तरफ देखता है उसे I1 दिखेगा. अगर वो नीचे की तरफ देखता है उसे I2 दिखेगा. डन है? लेट अस confine our this thing to the two images because answer given in the exercise is also for two image only. आप कह रहे हो इससे भी ज्यादा इमेज बन सकता है क्या? तो देखो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हो सकता है इस लाइट का, एंड देन रिफ्रैक्टेड another refracted lights I mean this refracted light will can reach to the eye when extended backward. So I mean we can explore more and more, but we have to limit our discussion to just two images getting formed, one by refraction, another by also reflection factor taking into account. So this is this. अब देखो second question में क्या कह रहा था, इसका B portion भी था, right? So B portion में क्या कह रहा है? At what distance from itself will the eye see the images of the fish? अब देखो image किसका देखा जा रहा है? Fish का. So object is what? Object is fish. And observer is who? Observer is the human eye. So light will travel from object to observer. So this is. So सबसे पहले आप बाउंड्री को इंडिकेट कर लो, यही तुम्हारा रेफरेंस लाइन होगा. डन है? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h by 2. Where is the image? That we need to explore, right? So light has to travel from here to here. एक मैंने normal के along light लिया. Second light कुछ ऐसे, it will refract away from the normal, right? So when extended backward it will meet somewhere here. आप इस image distance को I mean explore करो. तो इसको देखो यहाँ पे ये काफी छोटा बन गया ना, दिख नहीं रहा होगा. So let me make it appear a bit more bigger. तो यहाँ पे मैंने normal बनाया, ऐसे हुआ, and if you extend it backward it will meet somewhere here. So this is the image distance position from the interface. इसको आप निकाल लो. So mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. R is infinite, so this is 0. Okay. So mu2 यहाँ पे क्या है? Refractive index of media in which refracted light is. This is 1. V is v minus mu1 is how much? Mu. ऑब्जेक्ट कहाँ है? mu1 that is mu में, water में है, ठीक है. u will be how much? h by 2, proper sign convention, minus h by 2, and this is equal to 0. So v equal to how much? V equal to h by 2 mu with negative sign. Negative sign indicates that image getting formed is on the side of object. So this height is how much? H by 2 mu.
अब देखो आई को ये कहाँ दिखेगा, दिस फ्रॉम इंटरफेस इट इज h by 2 mu, फ्रॉम द आई इट विल बी हाउ मच, h plus h by 2 mu, so h plus h by 2 mu, ठीक है. So this will be how much, h कॉमन ले लो, 1 plus mu by 2, sorry, this is h by 2 mu, okay, we need to write it very carefully. So this is 2 mu basically, और यहाँ पे भी ये this is this, so this is equal to h1 plus 1 by 2 mu. Okay, so this is this. अब देखो सेकेंड इमेज कहाँ बन सकता है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट कभी मिरर को स्ट्राइक नहीं कर सकता, डन है. सो दिस इज सॉर्टेड. सेकेंड क्या हो सकता है. Now let us explore the possibility of second image formation. तो देखो यहाँ पे बन सकता है कैसे. Let's say light is not directly striking the boundary coming from the face. Rather, light is first falling onto the mirror. So it is falling onto the mirror like this. If normally it will get reflected back along the same line, and after that it will refract and reach to the eye. Refract at the boundary and then reach to the eye. Second light आप ले लो, this is oblique light, it will reflect at this point, and after reflection what will happen, सबसे पहले आप देख लो मिरर से इमेज कहाँ बना है. So this is one reflected light, this is another reflected light, so this is here, done it. And this will be at a height of h by 2 because object from the mirror is at a height of how much, h by 2. Now this refracted light which is coming from this virtual image formed by the mirror is now refracting at this interface, and it is this, done it, and it will meet to this refracted light at this point. So finally the light that will reach to the eye will seem like it is coming from this point. So this is another image that we can trace, done it. अब देखो इस image को आप कैसे trace करोगे, चलो बनाते हैं. So formula basic क्या है, mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0. So mu2 is what, mu2 is what, refractive index of media in which refracted light is, it is in media of air, basically it is in air, so 1 by v minus mu1 क्या है, media in which incident light is, it is in water, right, so it is mu divided by u, object distance. So इस interface से object distance क्या है, so incident light is coming from where, from here. So object distance will be this much, and this is equal to h plus h by 2. So this is your 3h by 2. This is 0. So v equal to how much? I mean with proper sign convention, this will be minus. So minus of 3h by 2 mu. So this is this. Okay. So this is somewhere here from the interface. So from I, it will be at what distance? From I, if you trace, then this is h, and this is how much? 3h by 2 mu. So image location here will be h plus 3h by 2 mu. So this is equal to how much? H common le lo, 1 plus 3 by 2 mu. This is going to be your answer. So I hope you are able to understand, how we can trace two images in this case. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye-bye.